Hello, my dear friends. Welcome all of you in my JEE mathematics classes topic limits and continuity. Here there is a question limit let f is a function from closed interval minus pi by 2 to pi by 2 to real number be a differentiable function such that f0 equal to half. If the limit x tends to 0, x into integral 0 to x ft dt upon e power x square minus 1 equal to alpha. Limiting value of this limit is alpha, then 8 alpha square equal to. This is question of JEE Main 2024. पिछले वीडियो में जिस फार्मूला का मैं उपयोग किया उसी फार्मूला को यहाँ भी हम उपयोग करेंगे. We are going to solve this question with my basic knowledge. F is a function from minus pi by 2 to pi by 2 to R. Be a differentiable function. Differentiable function. Differentiable function such that f0 equal to half. Since function is differentiable, so it can be integrable. फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है तो इसीलिए इसको हम इंटीग्रेबल भी होगा. और f0 का मान हाफ दिया हुआ है. फंक्शन का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 0 इक्वल टू हाफ. नाउ लिमिट x टेंस टू 0, x into 0 to x f of t dt upon e power x square minus 1 equal to limit x tends to 0 x into 0 to x ft dt upon x square into e power x square minus 1 upon x square. x स्क्वायर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. अब हम फार्मूला जानते हैं. एज वी नो लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1. x टेंस टू 0 सो x स्क्वायर टेंस टू 0 e पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1. इसका वैल्यू क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा. Now and this is equal to alpha. It is given this is equal to alpha. Limit x tends to 0 x into 0 to x integral ft dt upon e x square minus 1 equal to this equal to alpha. It is given alpha. Implies limit x tends to 0 x into 0 to x ft dt upon x square into 1 equal to alpha. Equal to alpha. 1x cancel. Limit x tends to 0 0 to x ft dt upon x equal to alpha. We replace x by 0 तो 0 to 0 integral this numerator will be 0 and x equal to 0. So this is in the form of 0 by 0. This is in the form of 0 by 0 using L hospital rule. Since x tends to 0, चूंकि x tends to 0 है
So differentiate numerator and denominator with respect to x separately. चूंकि x टेंस टू 0 है और ये 0/0 फॉर्म में है, इसीलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए सेपरेटली। अभी अभी हम लोग फार्मूला पढ़े, अभी अभी फार्मूला हम लोग d/dx इंटीग्रल gx अप टू hx ft dt बराबर f ऑफ hx इंटू h डैश x माइनस f ऑफ gx इंटू g डैश x। यूजिंग दिस फॉर्मूला implies limit x tends to 0 f of hx replace t by x, replace t by hx, the f of hx, the fx into h dash x, the hx equal to x derivative 1 minus f gx, gx equal to 0, the f0 into derivative of 0 is 0 upon derivative of x equal to 1 equal to alpha, implies limit x tends to 0 fx minus 0 upon 1 equal to alpha, implies limit x tends to 0 fx equal to alpha, implies f0 बराबर अल्फा। फ्रॉम क्वेश्चन इट इज गिवन f0 बराबर हाफ, तो हाफ इक्वल टू अल्फा implies अल्फा बराबर 1/2। नाउ 8 अल्फा स्क्वायर, नाउ 8 अल्फा स्क्वायर, 8 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 1/4 इक्वल टू 2, 8 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2। तो बहुत आसान था, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 0 टू x एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया, 0 टू x इंटीग्रल एफ टी डी टी अपॉन एक्स इक्वल टू अल्फा, x को रिप्लेस 0 से करेंगे, 0 टू 0 इंटीग्रल वैल्यू 0 हो गया, a से a डिफिनिट प्रॉपर्टी है, कोई भी इंटीग्रल a से a होगा तो उसका इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा, x0 तो ये 0/0 के रूप में हुआ। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यूज किया, सिंस x टेंस टू 0 सो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू x सेपरेटली। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला d/dx integral gx to hx ft dt equal to f of hx into h dash x minus f of gx into g dash x, the f of hx replace t by hx, the replace t by x, the f of x into derivative of x 1 minus replace t by 0 gx into derivative of 0 is 0 upon derivative of x is 1. This is equal to limit x tends to 0 fx minus 0/1 equal to alpha, limit x tends to 0 fx बराबर अल्फा, put replace x by 0 f0 equal to alpha। from question given f0 equal to half, half equal to alpha, alpha equal to half। now 8 alpha square equal to 8 alpha square 1/4, 4 2 जा 8 equal to 2। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इस फार्मूला को याद रखें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने स्किल को इसके साथ डेवलप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।